So, hello, hello, hello. Good evening, guys. Hello, hello, hello. Clear है, clear. Voice clear है. Okay. So, sorry for the trouble. So, good evening, guys. Welcome to the info session of BYTEVERSE, the annual hackathon of NIT Patna. So, आप सब आज यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि आप लोग को जानना था इस हैकाथन सेशन के बारे में, मतलब ये हैकाथन सीरीज है क्या और एक्चुअल में हो क्या रहा है कॉलेज में। आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने हैकाथन आज तक पार्टिसिपेट नहीं किया होगा, कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने किया है। तो यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने हैकाथॉन्स में पहले पार्टिसिपेट किया है? एनीवन? कोई नहीं है, सब बिगिनर्स हैं। ठीक है यार, हम लोग इसीलिए आ जाए हैं। सो दिस विल बी अ वेरी इंटरैक्टिव सेशन। ज़्यादा देर नहीं लेंगे तुम लोग का टाइम, ठीक है? और सारा तुम लोग का जितना क्यूरीज है सारा आज क्लियर हो जाएगा। सो नॉट टेकिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट। Okay, so you must have heard about Hack and ITP before, right? Did anyone hear about Hack and ITP before? मैम एनुअल हैकाथन सीरीज था इसमें और 2-3 बार हो चुका है पहले, ऑनलाइन मोड में। So that could have been a right answer. But anyway, actually Hack and ITP used to be a hackathon which was organized by Hackslash, right? And for the last 2 years it was being organized in the online mode, right? Because all our education was shifted to the online mode at the time being. But this year we are organizing it exclusively under the National Institute of Technology, Patna. And that essentially means that this time round, this is not going to be organized just on part of Hackslash. It is something that NIT Patna is organizing as its own annual national level hackathon, right? So, encompassing for 28 hours of rigorous, uninterrupted coding sessions, backed by brainstorming and problem solving discourses. I know all of these must be sounding very hard, unreadable words for you. But to be very simple, actually, this is something that is going to last for 28 hours. Okay, first things first. And you will be given an idea, not given, you will come up with an idea, right? You will come up with a design on how do you plan on implementing that idea. And in the course of those 28 hours, you will be surrounded by your peers and you will also have a really efficient set of mentors to help you out in order to implement that idea and actually transform your idea into a working prototype. Next slide, please. Okay. So what exactly is hackathon and why is it mandatory or even important for you to participate in a hackathon? So as I said, hackathon is something which is going to last, typically it lasts for 48 hours, but we are under time constraints. So we have planned it out for 28 hours. And as I said before, you will work with your peers and you will work with mentors in order to solve real world problems, right? We'll have a set of themes from which you can choose from that entire pool, and then you'll come up with a design and then you will implement that idea in the given time frame. It's important because you'll get to collaborate with peer programmers whom you obviously might not have much interaction with, given that it has not been quite a substantial amount of time since you've come in the college. Next, you will be making projects to solve real world issues. So even on a very small level, you will be contributing to some really major problems that are existing in the world, which is quite a great opportunity. Next, you will be competing with other teams. You will be working in a highly competitive environment in order to come up with the best solutions for those problems. And that is something that is going to eventually help you in the long run once you are working in the real world industry. You will get to socialize and network with people, and of course, you'll have an end product. Even if you don't have an end product, you'll at least have, you know, a very raw idea of what exactly do you want, how exactly did you want to implement that idea. Next slide, please. Now coming up, कि भाई, what are the perks and benefits of participating in such a hackathon which is so long, so tiring or something? No, it's not tiring, it's not boring, but it gives you a very vague idea, not a vague, or you can say it gives you a deep understanding कि भाई डेवलपमेंट होती कैसे है। जब तुम किसी वर्किंग एनवायरनमेंट में जाते हो, तुम्हारे को वहाँ बैठ के काम करना होता है, और सबसे ज़रूरी चीज़ जो कोई भी रिक्रूटर तुम्हारे अंदर खोजता है वो है सोशल स्किल्स। सबसे ज़रूरी चीज़ होती है टीम में काम करने की क्षमता। Because if you can't work in a team,
you can't be good in a job because job जो environment होता है किसी भी प्रोफेशनल जगह में, वहाँ पे इट्स ऑल अबाउट टीम एफर्ट, नॉट वन सिंगल पर्सन्स एफर्ट। किसी भी जगह तुम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अगर कर रहे हो तो तुम्हारे को एक पार्ट ऑफ कोड दिया जाता है, तुम्हारे को एक जॉब में एक पार्ट मिलता है कि भाई इस पार्ट को आपको ठीक करना है, इस पार्ट को आपको डेवलप करना है। और इसी टाइप से कई सारे लोग मिलकर उस पार्ट्स, थोड़े थोड़े पार्ट्स को बनाते हैं और सारा कलेक्टिवली जब एक बनता है तब जाके कोई सॉफ्टवेयर डेवलप होता है। और इस एनवायरनमेंट को इससे बढ़िया एग्जांपल मैं नहीं दे सकता हूँ अपने कॉलेज लाइफ में तुम्हें मिलेगा। बिकॉज तुम्हारे को सबसे पहले तो एक हैकाथॉन अगर तुम कर रहे हो तो तुम्हारे को अपने सीवी में लिखने मिलेगा कि मैंने हैकाथॉन में पार्ट लिया। इनफैक्ट अगर तुम जीतते हो दैट विल बी अ वेरी बिग बोनस टू योर सीवी एंड बिग बूस्ट। मोर ओवर तुम्हारे को इसमें बहुत सारे प्राइजेस हैं। इफ यू हैव सीन द पोस्टर्स इट्स अप टू पर 2 करोड़ फॉर मेन हैकाथॉन। सो इतना सारा प्राइजेस मिल रहा है एंड मोर ओवर आपको प्रोजेक्ट फंडेड, आपके प्रोजेक्ट्स फंडेड हो जाएंगे। मोर ओवर हमारे पास इंक्यूबेशन सेंटर की अपॉर्चुनिटीज़ है। आप लोग को इंक्यूबेशन सेंटर के बारे में कितना लोग को पता है? इंक्यूबेशन सेंटर, सो इंक्यूबेशन सेंटर का भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है जो कि फंड कर रहा है। इसके अलावा जो अदर प्रोफेशनल एनवायरनमेंट और अदर कंपनीज हैं वो सब की नज़र होती है कि भाई यहाँ पे क्या प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। वो लोग हम लोग के बेस्ट प्रोजेक्ट्स को उठाते हैं, उनको अगर पसंद आ गया तो वो उसको भी फंडिंग देते हैं। सो दैट इज़ अ वेरी बिग बूस्ट यू कैन गेट। मोर ओवर कि भाई आप अपना एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। एक आप अलग एनवायरनमेंट में जब काम कर रहे हैं, ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पे खाली डेवलपमेंट हो रहा है, आप एक दूसरे से कॉम्पीट कर रहे हैं, आप अपने आइडियाज़ को और बेहतर से बेहतर आइडियाज़ ला रहे हैं। तो ऐसे में जो सबसे टॉप पे होते हैं खाली वो नहीं सीख के जाते, सीख के सब जाते हैं, क्योंकि आप उनको देख रहे हो जो जीत रहे हैं, आप उनको देख रहे हो जो नहीं जीत रहे हैं, और आपको पता चलता है कि क्या सीखना है ताकि आप नेक्स्ट टाइम जीत सको। मोर ओवर ब्रेनस्टॉर्मिंग योर आइडियाज़। आप जब टीम में बैठते हैं, आपको एक आइडिया आया, कोई और बंदा उसको एनहांस करता है, कोई और बंदा उसको और बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट करने का तरीका बताता है। जब 4 लोग मिलकर एक साथ काम करते हैं तो ज़्यादा बेटर आइडियाज़ बनते हैं और ज़्यादा अच्छा प्लानिंग और वर्किंग होता है। मोर ओवर प्रोडक्टिव और एफिशिएंट है। क्यों क्यों प्रोडक्टिव है भाई? तुम्हारा क्या फ़ायदा हो रहा है? फ़ायदा इतना सारा तो बता दिया, और उसका फ़ायदा बताओ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। Okay, so as I said at the very onset, there are 3 mantras, okay? Those 3 mantras, they are not important for you to follow. This is just the manner that we encourage for you so that you are actually able to deploy your project. The first step is planning. You are going to select a theme. You are going to select a theme out of the existing set of themes that we are going to provide, which you must have seen in the rule book, I guess. Has everyone gone through the rule book? That was a very dull response. Okay, great. So you must have seen there was one particular page in which we had outlined a set of themes, right? The ones that we encouraged you to choose from. So you're going to select a theme, you're going to select an idea which is going to be, dependent on that particular theme. And then you move on to the second step, which is designing, right? So you are not going to jump directly into, actually building that idea right away. You are going to have a very raw prototype. You are going to think realistically, how do you plan on approaching that problem statement? What are the different constraints or the problems that you are going to face along the way? And then you will move on to the third step, which is building that particular idea into the prototype with the help of the peers that you'll be surrounded with the help of mentors that we'll provide under the given time constraint of 28 hours. Please move on. Okay, and these are the tracks which we are, just providing for the sake of it. Although hackathon is not necessarily about, choosing a track and only limiting yourself to that particular track. You could have an idea in blockchain, right? You could have an idea that you want to implement using blockchain, but you will need some skills in web development to, actually transform your idea on the front end level as well, right? So, but just for the sake of it, these are the tracks that we encourage you to choose from. You have web development, you have app development, machine learning, artificial intelligence, AR, VR, and this year is the first time that we are also inaugurating blockchain as a part of the tracks. Next slide, please. Other than these, we also have special tracks by Solana, Replit, Filecoin, and Polygon. You could choose these special tracks to work for your project ideas as well. Moving on. Yes, as I said in the beginning, these are the proposed set of themes that we encourage you to choose from. You have education and employability, right? So if you're talking about India, right? So even in the case of India,
Education and unemployability, not employability, is something that is a raging issue, right? You have different government schemes which are coming up to solve these problems, but they are still something which are not helping us emerge on the global map as well. So even on a very small level, if you come up with ideas that help tackle these problems, I think that would be a great contribution that you could be giving on part of yourself. Next up, you have food, which is obviously a problem in third world countries and continents such as Africa. You could choose that particular track. You have healthcare, social security and awareness, right? Even on the digital front, if I'm talking about cyber security, even with the advancement of cyber security, no one can deny that there has also been a substantial and exponential growth in the number of cyber crimes, right? So you could choose that as an inspiration for your project idea. Next, you have sustainable development. I think a lot of people would have attended the G20 set of events that was organized previously. How many of you attended the G20 summit? Okay, that's a disappointing number. These opportunities are not something. Okay, are you aware of the G20 summits that happening on global level? Yes, sir. इस बार कौन होस्ट कर रहा है? इंडिया। तो G20 में क्या चीज़ की बातें होती है? ग्लोबल इश्यूज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बातें होती हैं कि भाई हम लोग कैसे मिलके ऐसे तरीके से डेवलपमेंट करें कि हम लोग जो रिसोर्सेज हैं उनको बेटर यूटिलाइज करें कि सारा हम लोग खुद एग्जॉस्ट ना कर ले, अपने फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी बचा कर रखें और ऐसे ऑल्टरनेटिव्स खोजें जिससे हमारे नेचर को हार्म ना हो। सो वैसा थीम है। Right, so sustainable development is also a theme that you could have chosen from. Next, you have open innovation. This is entirely open for you. You could have creative ideas to solve problems which we might not have been able to identify, right? But on your own front, if you are able to identify some problems in the system or in the society that you think you can come up with innovative solutions for, we highly encourage you to go ahead and do that. Next slide, please. Now, incubation center पे वापस आते हैं. So this is a special side track. So this incubation center in IT Patna is sponsoring us, and it is giving a very big opportunity for all of you that it will choose top 3 entrepreneurship or business model or startup ideas from all the entries that are coming in this hackathon and give them a chance to pitch their ideas in front of incubation center, which will be funded by them if they get selected. So it is a very big opportunity because not only are you getting in a big funding from them, but if you are getting selected, you will be directly under the central government because the incubation center is a central government program. So it is a very big opportunity, and what I can say, all of you can do is Shark Tank देखा है सबने Shark ना? Tank, yes. Shark Tank कितने लोगों ने देखा है? Shark Tank में होता क्या था? So basically वही चीज़ है। Incubation Center भी ये अपॉर्चुनिटी हमारे बच्चों को देना चाह रहा है कि वो अपने आइडियाज को आगे पिच करें। So not necessarily ऐसा होना चाहिए आपके पास पहले से कोई बिजनेस मॉडल सेटअप है, आपको बस आइडियाज लेके आने हैं। यार इतना सोचते हो, इतने क्रिएटिव हो, बस आइडियाज भी लेके अगर आप आ रहे हो और उनको इम्प्लीमेंटेशन करने का तरीका है तुम्हारे पास कुछ, so they will be funding you, they will be sponsoring you कि तुम उस आइडियाज को रियलिटी में बदलो। सो ये इंक्यूबेशन सेंटर का अपॉर्चुनिटी है और मैं चाहूँगा कि सारे फर्स्ट ईयर स्पेशली इस अपॉर्चुनिटी के लिए ज़रूर से ज़रूर पार्टिसिपेट करें क्योंकि फर्स्ट ईयर हमारे बहुत क्रिएटिव होते हैं। Again, there is a point that I'd like to cover over here. Don't be intimidated कि मेरे solutions सिर्फ technical हैं, I don't know anything about finance or things like that, so I won't be able to pitch my ideas, right? If you have a working model which has real world relevance, which is scalable, which is something that can be, employed for the society, then you will be funded, not only funded, you will be guided by professionals, by some people who are actually operating in the industry to come up with the financial aspect of that particular project, okay? So on your front, you only need to come up with innovative solutions. The financial aspect of it, the business models and everything, those are things that will be taken care of eventually. Next. Right, now this is the most important part of this info session, the set of instructions, and I request everyone, even the ones who are slacking at the back, to please pay attention to this particular set, otherwise you will actually be facing problems once the main hackathon begins. First up, as I said in the beginning, the hackathon is going to last for 28 hours, and the dates are 15th April 2023, 4 p.m. IST to 16th April 2023, 8 p.m. IST. Of course, since this is something that Hackslash is also a part of, Hackslash does not take any sort of registration fee for you to actually participate in the event.
the past, the present, and the future. Next up, the hackathon is proceeding in a hybrid mode. Now, this is especially an opportunity for the first years because in our time, for second years and third years, this hackathon only took place in the online mode. And there's nothing that I'm trying to say that online mode does not offer as much opportunities as offline or hybrid mode would. But of course, when you're working in the environment, right, you're surrounded by people whom you're actively working with, and you have time constraints, then that definitely does give you an edge over working, in the online mode. So that is something that we are doing for after a set of quite a long time. Next up is very important that for the beginning aspect of it, you are going to submit a presentation, right? We're not asking you to give a fully functional model, a fully functioning product, the final product. That is not something that we ask of you right away. Firstly, you are going to make a presentation and then you are going to brief how you are planning to work on that idea, a very brief implementation details. Why do you think your idea sets you apart from other ideas which your peers must have proposed? And then on the basis of shortlisting that would have been happened from that presentation round, we will select 20 teams to actually come up with their ideas and implement them in real time at their given dates. Again, I don't think this has much relevance, but I'll still highlight the point that we encourage participation from teams that are coming from Patna, but we also have the provision for online mode. So in case you are not shortlisted, right? You are not shortlisted for the main hackathon in the offline mode, you can still participate in the online mode, right? Next up, you have all, yes, this is a very important point that all the announcements with regards to the event is going to be made on the /Discord server. I know that everyone must have seen the registration links and then they would have seen something very obscure as Discord and they must have, उसे ऐसे आगे बढ़ गए होंगे. किसने किसने Discord पर अपनी जाके IDs बनाई registration के बाद? सबने नहीं बनाई क्यों? पहले से है? कितने लोग /के डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर चुके हैं? और बाकी लोग का भी पहले से है या? बाकी लोग को ज्वाइन नहीं पहले करना से है members हैं डिस्कॉर्ड? ऐसे. Okay, but it is mandatory on a serious level. It is mandatory. This is only for you people's sake, right? So that you do not miss another event update. Moving on. Next slide, Simran. तो कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है हैकाथन का? ओके. और कितने लोगों ने नहीं किया, मतलब बाकी लोग बच गए? So, I'll just brief out कि आप लोग रजिस्ट्रेशन कैसे करना है. Basically आप जब डेफोली में आप लोग का उसमें जाओगे BYTEVERSE का, so you will see a apply now link. Just click on it. Next slide. अप्लाई नाउ करने के बाद कुछ ऐसा फॉर्म आएगा, उसमें जो भी बेसिक डिटेल्स तुमसे पूछी जा रही हैं, जस्ट फिल देम आउट. भाई तुम्हारा नाम क्या है, फिर आगे नेक्स्ट डिटेल्स. आगे तुम्हारे पास आएगा भाई एजुकेशन के बारे में, तुम्हारा अपना एजुकेशन कॉलेज नेम आएगा और तुम्हारा फील्ड ऑफ स्टडी पूछा जाएगा कि भाई कौन से ब्रांच में हो. अपना अगर तुम्हारे पास, हाँ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सबको अपना गिटहब का रिपोजिटरी यहाँ पे लिंक शेयर करना होगा. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो मेक श्योर तुम लोग अपना गिटहब रिपोजिटरी बना लो, उसको डालो. मोर ओवर हमारे को लिंक्डइन के भी आईडीज तुम लोग के चाहिए होंगे. नेक्स्ट है फाइनल. इसके बाद तुम्हारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा. बेसिकली अब टीम कैसे बनाना है, तो इसके बाद अगर तुम जब सबमिट कर लोगे तो इसके बाद एक इंटरफेस आएगा. वहाँ पे लेफ्ट साइड में तुम्हारा टीम का रहेगा, टीम मेंबर्स और टीम किसी पार्ट बनना है. तो बेसिकली तुम्हारे को अपने दोस्त से दोस्त की आईडी लेनी है या तुम्हारे दोस्त को अपनी आईडी दे देनी है. वहाँ से वो टीम में तुम्हारे को ऐड कर देगा. वहाँ ऑप्शन आता है. बस सबको अपना अपना रजिस्ट्रेशन इंडिविजुअली करना है और टीम्स तुम बाद में फॉर्म कर सकते हो. और ये सारी टीम्स 13 अप्रैल से पहले फॉर्म कर लेना है तुम लोगों को. सो मेक श्योर कि तुम लोग डेडलाइन मिस ना करो. नेक्स्ट स्लाइड. Before moving on, how many of you already have accounts on GitHub? Okay, I can see a small portion who don't. Okay, so there's no need to feel intimidated by that. Okay, we'll have a special session on Git and GitHub before the actual hackathon begins. So of course, I encourage everyone to participate in that. Even if you do have an idea about what GitHub is, how it operates, I still would ask you to, join that session since it will be nothing but informative. Next up, as I said, the /Discord server, it is mandatory for everyone to join the /Discord server so that you do not miss any event updates regarding to the hackathon.
And after that, you will be asked to open a support ticket on that particular server, and you'll have to get your dedicated private team channel. Now, this is something which is very crucial, because if you fail to do this, then this could lead to automatic disqualification of your team. Of course, the competition is open for teams comprising students of first, second, and third years who come from Bachelor's of Technology programs or even BCA programs. For the context of you guys, all the BTech first, second, and third years are encouraged to participate in the hackathon. Next, per team, you are allowed to maintain a group of 4 members per team, and it is not restricted for you to make your team exclusively of people who come from the same college or institution as you. You are also allowed to make teams with people coming from different colleges. So that is not a restriction that we are imposing on you. Of course, none of the organizers or mentors or judges who are organizing this particular session of BYTEVERSE will be participating in the main hackathon. रूल बुक है भाई, रूल बुक सब लोग कितना लोग रूल ने बुक रूल बुक देखी पढ़ा है ना है? सबने? देखा है, खोल के देखा है, पढ़ा है, 16 पेज पढ़ लिया। मैंने नहीं पढ़ी अभी तक। Moving on. Okay, so this is the timeline of the event. Not that this was extremely necessary, but we started the registration dated 30th March. Today is the info session dating 2nd April. We'll have the kickoff event before the actual hackathon inaugurates, which is the UI UX hackathon to be organized on 8th and 9th April. Then we'll have the inaugural ceremony for the main hackathon on 12th April. Everyone, please, all of you must have received the timeline, right? Okay, so please mark your calendars. Do not miss all these dates, okay? And then you will have the opening ceremony, and the hackathon is going to start on the 15th April, as I said, 4 p.m. IST, and it will last till 16th April, 8 p.m. IST. Following which, we'll have the community review window, which is going to start at 9 p.m. the same day that your hackathon ends. And after a time period of 24 hours, that community review window will also close. Of course, not forgetting the closing ceremony, which is slated to be held on the 22nd of April. That is what is going to mark the end of this entire hackathon festival. Moving on. Okay, aside from the main hackathon, aside from the UI UX subset of the hackathon, you also have multitude of workshops for everyone, right? We have speakers coming in from Postman, and these are something that you should actually attend, even if these are not something that you will derive your actual inspiration for your projects, but these are certainly going to be extremely informative sessions. And apart from these 3 workshops that are slated 13th, 14th and 15th April, we also have a lot more session of workshops coming. Please stay updated, and please always check out any kind of updates that you receive on your official WhatsApp groups for that. Moving on. मेरा डिपार्टमेंट आता है UI UX hackathon. So this year we are including a very fresh branch of UI UX hackathon. So UI UX से कितने लोग यहाँ पे मतलब जान रहे हैं UI UX होता क्या है? कितने लोग जानते हैं? So basically UI UX stands for user interface and user experience, जिसको basically हम लोग कहते हैं कोई भी ऐप या कोई भी वेबसाइट या फिर कोई भी पोर्टल है, उसका तुम्हारा कैसा दिखता है वो, मतलब तुम्हारा उसका फीचर्स कैसा है और उसका एक्सपीरियंस कैसा है कि लाइक यूजेबिलिटी कितनी इजी है। इंस्टाग्राम कितने लोग चलाते हैं यहाँ पे? मान ही नहीं सकता वो लोग नहीं चला रही, हाथ उठाओ जोर से। सब चला रहे हैं यार मैक्सिमम लोग। सो इंस्टाग्राम पे यार तुम लोग अभी देखे होगे बटन इधर उधर जाते रहते हैं, बड़े इरिटेटिंग लगते हैं, मेरे को तो लगता है। बाकी लोगों को क्या बहुत इरिटेटिंग लगते हैं ना, तो वो सब भाई UI UX डिजाइनर का खेल है, लोग इधर उधर कर रहा है। सो इससे यूजर एक्सपीरियंस वो लोग थोड़ा खराब तो कर रहा है, लेकिन उनका मन। लेकिन इसी बात पे देखा जाए तो कुछ ऐप्स के या फिर कुछ साइट्स के यूजर इंटरफेसेस बहुत अच्छे होते हैं, हमें बड़ा इजी लगता है। जैसे कि फेसबुक है, इट इज़ वेरी इजी टू यूज फॉर एनीवन, जिसको आज तक नहीं चलाया। वहीं डिस्कॉर्ड है, इट माइट नॉट बी दैट इजी फॉर एवरीवन। सो मूविंग ऑन, तो हम लोग का UI UX हैकाथॉन कंप्लीटली ऑनलाइन मोड में होगा, जो कि 24 आवर्स लॉन्ग है, जिसमें आपको अपनी पूरी क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक स्किल्स, डिजाइनिंग, जो भी आपका एंथुसियाज्म, आइडियाज है, सब लगाना है। और इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो होगा वो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम लोग रिलीज करेंगे, और उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आप लोगों को कंप्लीट करना है विद इन द टाइम लिमिट। सो इसके लिए आप लोगों का 8 तारीख को स्टार्ट हो रहा है ये फ्रॉम 6 PM एंड इट विल एंड ऑन 9th
अप्रैल 6 PM। सो ये 24 आवर्स का आपका मेन टाइम रहेगा जिसमें आपको डेवलपमेंट करना है और इसका कोई रजिस्ट्रेशन फी नहीं है ऑफ कोर्स, क्यों नहीं यार। फिर जो है इस हैकाथॉन जो है पूरा ऑनलाइन मोड में होगा, बता ही दिया है। फिर हाँ, इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम लोग आप लोग को दे देंगे। दिस विल बी प्रोवाइडेड जस्ट एट 6 PM 8 अप्रैल। और आप लोगों को इसमें करना क्या है, तो अपना डिज़ाइन तो बनाना ही है, उसके अलावा आपको उसके वायर फ्रेम्स जो भी आप बनाते हो, सो वायर फ्रेम्स आर बेसिकली आप अगर उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हो लाइक ढांचा, लाइक कोई भी बिल्डिंग बन रही है तो पहले छड़ से उसका स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, उसके बाद उसमें सीमेंट या ब्रिक्स डाले जाते हैं। सो बेसिक वायर फ्रेमिंग वही होती है। सो वायर फ्रेमिंग थोड़ी करनी है आपको, उसके बाद उसका डिजाइनिंग करनी है, प्रोटोटाइपिंग भी करनी है। प्रोटोटाइपिंग इज बेसिकली आपको उसके में फंक्शनैलिटी डालनी होगी कि भाई ये बटन क्लिक करने पे ये खुलेगा, ये यहाँ जाने पे ये होगा, इस नेविगेशन करने पे क्या होगा। बेसिकली जस्ट आपको सबको कनेक्ट करना है कि भाई बढ़िया लगे, प्रॉपर कंप्लीट प्रोजेक्ट प्रोफेशनल चीज़ें लगे। इसके बाद इसके सारे अनाउंसमेंट इस हैकाथॉन के रिगार्डिंग भी हैशटैग्स के डिस्कॉर्ड सर्वर पे आएंगे। सो मेक श्योर यू जॉइन डिस्कॉर्ड सर्वर, क्योंकि आप लोग की जितनी भी टीम्स बनेंगी नॉर्मली हैकाथॉन में, वो सारी डिस्कॉर्ड सर्वर पे आपको एक वॉइस चैनल मिलेगा और उसी में आप लोगों को अपने एक दूसरे से कोलैबोरेट करके काम करते रहना है। आप उसमें हम लोग के साथ जुड़े रहेंगे, हम लोग के मेंटर्स आपको वहाँ पे गाइड करते रहेंगे एंड मोर ओवर जजेस भी वहीं पे आपसे आपका आइडियाज़ का रिव्यू लेंगे। मूविंग ऑन नेक्स्ट स्लाइड। सो इसका रजिस्ट्रेशन कितने लोगों ने यूआई यूएक्स हैकाथॉन का रजिस्ट्रेशन किया है? कितना लोग करना चाहते हैं? ठीक है, अच्छा नंबर है। सो बेसिकली हम लोग अनस्टॉप पे इसको होस्ट किए हुए हैं, सबके पास आई थिंक पहुंच गया होगा इसका पोस्टर्स एंड ऑल। सो बेसिकली अनस्टॉप पे तुम लोग जाओगे या फिर BYTEVERSE राइट क्लिक सर्च करोगे, एक आएगा, सिंपली रजिस्टर पे क्लिक करना। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद अपना बेसिक डिटेल्स तुम्हारे को भरना है, ईमेल आईडी, नंबर, नेम और ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद नेक्स्ट और कुछ डिटेल्स अगर मांग रहे तो दे दो। इसके बाद तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, दिस मच ओनली, सबमिट कर दो, सिंपल। अगर तुम्हारे को टीम मेंबर ऐड करना है, ऐड मेंबर से उसके डिटेल्स लो, उसको भरो, हो गया, टीम बन गई, दैट वाज ऑल। और अब आते हैं कि सबमिट करना क्या है। तो थोड़े से रूल्स हैं इसमें कि भाई आप जो भी बनाओगे उसका PNG फाइल या फिर PSD फाइल या फिर AI फाइल या फिर फिग्मा फाइल तुम लोग को देनी है। फिग्मा फाइल की लिंक्स भी हम लोगों को चाहिए होंगी अगर तुम फिग्मा पे बना रहे हो। मोर ओवर प्रोग्रेस इमेजेस देनी है। प्रोग्रेस इमेजेस रेफर्स टू योर स्क्रीनशॉट ऑफ योर डेस्कटॉप व्हाइल इन डेवलपमेंट। तुम लोग जब भी डेवलपमेंट स्टार्ट करोगे उस समय तुम्हारे को एक स्क्रीनशॉट लेना होगा, तो जब तुम बना रहे हो उसके बीच में स्क्रीनशॉट लेते रहना होगा स्क्रीन का कि भाई आप लोग खुद से बना रहे हो, उसका मेजरली आपको प्रूफ देना है, बिकॉज दिस इज कम्प्लीटली ऑनलाइन एंड वी नीड सम इंटेल फ्रॉम योर साइड ऑल्सो। सो मोर ओवर वायर फ्रेम्स और डिजाइन दोनों सबमिट करने होंगे। अगर आप वायर फ्रेम्स पेंसिल से भी ड्रॉ कर रहे हो पेपर पे, जस्ट क्लिक द फोटोज एंड सबमिट इट। नेक्स्ट आप लोगों के पास एक PDF फाइल होनी चाहिए जिसके अंदर आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो मिलेगी उसको सिंपली कॉपी पेस्ट वहाँ पे मारो एक डॉक फाइल में। उसके अंदर अपना सारा डिस्क्रिप्शन लिखो, भाई आपने क्या क्या उसमें बनाया है, कैसी फंक्शनैलिटीज रखना चाहिए। आपको बेसिकली थोड़ी सी ब्रांडिंग करनी है उसकी। आपने अगर कहीं से रेफरेंसेस लिए, उन रेफरेंसेस के बारे में डालो, उनके लिंक्स है तो लिंक्स अटैच कर दो। यूजर फ्लो डायग्राम आप लोगों को डालना है। यूजर फ्लो डायग्राम बेसिकली उसका आपको फिग्मा पे अगर आप कर रहे हो तो प्रोटोटाइप बटन चेक करोगे तो तुम्हारे सारा यूजर फ्लो डायग्राम पता चल जाएगा, कैसे कैसे आप इसको बनाए हो प्रॉपर। उसको उसमें मेंशन करना है प्रोटोटाइपिंग की, और फिग्मा की जो भी लिंक्स होगी वो सारी लिंक्स उसमें रहनी चाहिए। अगर आप स्क्रीन रिकॉर्ड करके दे रहे हो तो वो स्क्रीन रिकॉर्ड को ड्राइव पे डालो, उसका लिंक जनरेट करो, पब्लिक करके यहाँ लिंक्स होनी चाहिए सारी, और आपको इस पूरे का एक PDF बना के सबमिट करना है। और सारी सबमिशन गूगल फॉर्म में होंगी जो कि हम लोग प्रोवाइड कर देंगे वंस द हैकाथॉन स्टार्ट्स। और ऑफ कोर्स प्लेगरिज्म विल लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन। यार चोरी वोरी नहीं करनी, खुद के ओरिजिनल आइडियाज़ की बात हो रही है, खुद का डेवलपमेंट करो। एंड नेक्स्ट सिर्फ सो इसका टाइमलाइन ऐसा है कि रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्टेड हो चुकी है, इन्फोसिशन आज चल रहा है। सो हरी अप बिकॉज रजिस्ट्रेशन विल एंड ऑन 6 April and we currently have got more than 200 participants and seats are filling fast, so quick। और हैकाथॉन 8 तारीख को स्टार्ट होगा, 6 बजे शाम में ख़त्म हो जाएगा 9 तारीख को शाम में 6 बजे। एंड कम्युनिटी रिव्यू इसका हम लोगों का लंबा चलेगा फ्रॉम 9 April 9 PM to 11 April 9 PM and it will have a closing ceremony with the main hackathon series on 22 April. Next, हाँ right. Okay, so अब सबसे ज़रूरी पार्ट आता है, मिलेगा क्या यार जीतने पे? मिलेगा क्या ये मोटिव नहीं होना चाहिए पहली बात तो, ठीक है। इतना एम्बिशियस होके कुछ नहीं होने वाला लाइफ में। यू शुड फोकस ऑन लर्निंग, ठीक है। लुक फॉर न्यू लर्निंग एक्सपीरियंसेस, लुक फॉर नेटवर्किंग, लुक फॉर सोशलाइजिंग, ठीक है। देयर इज नॉट ओनली विनिंग इज नॉट द एंड पॉइंट,
right, to this hackathon. But still, just for the formality's sake, we'll have a cash prize of 10,000 rupees for the winner. Other than that, you will also get subscriptions such as you have lifetime Taskade workspace upgrade, then you'll have Wolfram award letter, you'll have 1 month access to all courses on interview cake, then you'll have 1 month free access to all business plan features of the Echo 3D platform. You'll have a 1 year license of Azure RP team plan. There will be a Sparks pack which you'll also receive, and of course the certificate of excellence is something that the winner is obligated to receive. But fear not, we also have a set of lucrative prizes for the runner-ups as well. Coming up for the first runner-up, you'll get cash prize of 8,000 rupees. Similar subscriptions as lifetime Taskade workspace upgrade, then Wolfram award letter, 1 month access to courses on interview cake, then 1 month free access to all business plan features. Of course, Swags pack and certificate of excellence is also going to be released to the first runner-up. But the second runner-up does not fall too far behind because they will come up with a cash prize of 6,000 rupees. The subscriptions are the same as the previous two. The Swags pack and the certificate of excellence is also something that you're going to receive. Now, this is something which is extremely crucial Women's. for the girls out there. How many girls are attending this session? I can't see a great number. Okay. Girls, make some I noise. do spot a few girls. You're all sitting very यार scattered. सेकेंड ईयर so- में आ गए हो यार, तुम लोग तो हल्ला मचा लो, थोड़ा अपने जूनियर्स को मोटिवेट करो. Okay, but look, all of us know, again, कि इस समय every industry is requiring gender diversity. ठीक है, gender diversity के नाम पे girls, all of you have an edge. ठीक है, that is something that I think everyone recognizes and understands. So, for that, we have a best all-girls team provision also. Regardless of who the winner or the two runner-ups were, you'll also have the best all-girls team who will receive a cash prize of 5,000 rupees. The subscriptions are the same that the winners and the runner-ups are going to receive. And you'll also get a Swags pack and certificate of excellence. Girls, I do encourage everyone to participate very, excuse me, all those people at the back, do you have a working set of ideas that you've come up with? I've been observing you for quite some time now. If you do eventually get stuck in the hackathon, no one is going to be answerable for your queries, just so you know. Okay, thank you. So as I was saying, the best all-girls team. Right, so girls, we do expect great participation from your side, okay? This is a great opportunity that you're getting, and it does not matter what your experience is or what you should be intimidated by the tech stacks or what project ideas are you going to come up with. As I said, you just come up with a raw idea, you come up with an implementation plan. You do have so many resources all over the internet, right? You have YouTube at your discourse, you have several other platforms, right? So you could utilize them for your benefit. So I do expect maximum participation from girls. Even the ones who could not come to this info session for some reason, I expect that all of you are going to reach out to them and you're going to encourage them and you're going to tell them the benefits that this hackathon has to offer. Moving on. Yes, we do have participation prizes as well. As I said, winning is not the ultimate goal of participating in a hackathon. The ultimate goal is learning new things, right? But regardless of that, because you participated as a recognition and acknowledging the will to participate, we will provide you with a 1-year upgrade to Taskade Pro. You will have 30 days Wolfram 1 access. You will have access to courses on interview cake also. Other than that, the Swags kit and certificates of participation are something that will be provided to all the participants regardless whether they won or not. Moving on. Yeah, this part I will hand over to Samir. These are concerned with the prizes for the UI, UX So hackathon. for the UI UX hackathon, the winner team will be getting a cash prize of 3,000 rupees, and more than other than that, we'll also having all the subscriptions which were same for the winners for main hackathon, the Taskade workspace upgrade for lifetime, which is I think worth 1 lakh rupees. And moreover, we have Wolfram award letter, and other than that, 1 month access to all
courses of interview cake, 1 month free access to all business plans featured by Echo 3D, 1 year license to Azure RP team plan, swags pack for all the team members, and certificate of excellence. Moving on, we have a runner-up. The first runner-up will be getting the 2000 rupees cash prize and all the same benefits as the previous one. Next, the second runner-up team will be getting 1000 rupees cash prize and all the same benefits. Now, lastly, the participants for UI UX hackathon will be getting the same benefits as the participants of main hackathon. So it's something you can look forward to, if not the winning. So don't be afraid that you are not very well with UI UX. Just participate and enjoy the environment and learn something new. Moving on, Discord. Please join the Discord. It is very important for all of you to join our Discord server. I cannot express how important it is for everyone to join the Discord server. You might not realize it now, but it is extremely crucial if you want to be acquainted with every single step or updates regarding the hackathon. This is how you can join the community. Everyone, even the ones at the back, please let me know if you are able to scan this QR. If you're not able to view from that distance, you can view that from the TV screens. Please let me know if you're facing any issue. Any success as of yet? Has anyone been able? Only one person. नहीं हो रहा है. जिसका नहीं हो रहा है तो ओके, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे लिंक्स भी चले जाएंगे तुम लोगों के. और यू कैन गो टू द इंस्टाग्राम पेज ऑफ / वहाँ पे लिंक फ्री बायो पे लिंक फ्री है, उसमें से लिखा. हाँ, रूल बुक में भी है. तुम लोग रूल बुक में भी अगर जाओगे, हम लोगों के बाइटवर्स के रूल बुक में जाओ, उसमें रूल बुक में लास्ट पेज पे दिया हुआ है. इट इज अ वेरी क्लिकेबल लिंक. जस्ट क्लिक इट एंड यू विल जॉइन द डिस्कॉर्ड सर्वर. और हाँ, ऑल गर्ल्स टीम में 4 लड़कियां होनी चाहिए. All girls, that is implied. नहीं, कुछ महान बुद्धि भी होते हैं. वेल, मेरे को बहुत जोर से बोलने का मैंने बोल रहा हूँ सर. नहीं. हाँ, यस. हाँ, अगर ऑल गर्ल्स टीम का मतलब ये नहीं है कि 4 लड़कियां. हाँ, मतलब सारी लड़कियां होनी चाहिए. अगर एक है तो एक भी चलेगा. सिंगल गर्ल, डबल गर्ल. Maximum of 4 Maximum of 4 okay? girls, but everyone should be a girl. Sir. Well, कभी-कभी मेरे को लगता है 4 लड़कियां मिलकर डेवलपमेंट करेंगी कि गप मारेंगी. डेवलपमेंट करेंगी, करोगी ना लड़कियों? वेरी गुड. लड़कियां बातें करती है ज्यादा यार. थैंक यू. आज तक के लोग डिस्कॉर्ड सर्वर पे आ गए हैं. कुछ चीजें हैं जो गाइडलाइंस है, फॉलो करनी होगी. डिस्कॉर्ड सर्वर में आने के बाद अपना जो ऑफिशियल नेम है, I don't want that cool dude 69 or something like that. Okay? सही लिखो. So make your name, your official name, your Discord nickname. Okay? तो कितने लोग सर्वर में आ गए हैं? बाकी कितने लोग नहीं आ पाए अभी इशू तक? हो रहा है. स्कैन नहीं हो रहा है. रूल बुक के अंदर से भी आ सकते, बाद में आते हैं अगर अभी नहीं होगा. नेक्स्ट करो. हाँ. Okay, once you are entering the official /Discord server, then you will eventually form your team channel. Okay, but those are things that should be reserved for the last. Please, everyone, I request and urge every single person to first join the /Discord server. Okay, if you are not able to scan the QR codes, you could visit the website.
वेबसाइट के लिंक्स भी आए होंगे ना बाइटवर्स के? अरे आई डू एक्सपेक्ट अ रिस्पांस यार। इतना डर कौन है? फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर? फर्स्ट ईयर एक बार चिल्लाओ तो। क्या सही चल रहा है? सेकंड ईयर छोड़ दो। जूनियर सो एक बहुत ही स्पेशल इवेंट होने वाला है। APIDS पटना का वर्कशॉप सेशन होने वाला है 15 अप्रैल को। सो डू जॉइन दैट। ये सेशन ऑफलाइन होगा एंड वी विल बी रिलीजिंग द रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर दिस। लिमिटेड सीट्स हैं, ठीक है। प्रोफेशनल्स यहाँ पे आएंगे, स्पीकर सेशन होंगे, 3 स्पीकर सेशन है इसके। API 101, 102, डॉकर एंड 103। और इन सेशंस में खाने पीने की भी व्यवस्था हो जाएगी, ठीक है। बट सीट्स लिमिटेड है, सो मेक श्योर तुम लोग जल्दी भरोगे जब आएगा। नाउ सबसे बेस्ट पार्ट पे आते हैं। सो वी आर लॉन्च आवर ऑफिशियल मर्चेंडाइज। तो कितने लोगों ने देखा है हम लोग का मर्चेंडाइज का फोटोज या कुछ भी? पोस्टर्स इतने सारे लगाए हमने, मैसेज फॉरवर्ड कराए। कैसे लग रहे हैं डिजाइन? अच्छे हैं? कितने लोगों ने परचेज किया? कितने लोगों ने परचेज किया है यहाँ पे? ठीक है, कम है लेकिन ठीक है यार, करो। बाकी लोग क्या बैठे हो यार? तुम लोग को मन नहीं करता कि NID पटना का लोगो लगा के मुंह पीछे भी NID पटना लिखा है, आगे भी NID पटना लिखा है? जो भी है यार, कॉलेज का एक होना चाहिए। अपने कॉलेज का मर्ज नहीं पहनोगे यार कभी। और इतना अच्छा डिजाइन है। एक प्रीवियसली इससे पहले एक मर्चेंडाइज लॉन्च हुआ था, नाम नहीं लूंगा। धोखा था वो, अभी तक नहीं मिला है। और डिजाइन तो खैर वेरी ब्यूटीफुल डिजाइन। बट हाँ यार, ये बहुत मेहनत से हम लोग डिजाइन की है, ठीक है। हम लोग का डिजाइन टीम ने काफी प्यार से इसको डिजाइन किया तुम लोगों के लिए, और हम लोग बहुत दिन रात मेहनत करके तुम लोग के लिए लाए। तो मेक श्योर तुम लोग खरीदो यार, कुछ कॉलेज की निशानी रहनी चाहिए। और हैकाथॉन है यार, कॉलेज का इतना बड़ा हैकाथॉन हो रहा है। हम लोग को बाहर से, तो यहाँ से ज्यादा तो अभी बाहर से पार्टिसिपेशन हमको आ चुके हैं। तुम लोग कर क्या रहे हो पता नहीं। एंड मेक श्योर तुम लोग सोवेनियर के तौर पे इसको लो। एंड प्राइसेस भी बहुत मिनिमल है यार। बाहर कॉलेज से लोग आएंगे, सो यू शुड बी एबल टू फ्रंट ना कि हाँ नए कॉलेज जो ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। अरे मैं IIT बनारस PhD गए थे हम। सो वहाँ पे हम लोगों को जहाँ पे हम लोग रह रहे थे, वहाँ पे दूसरे कॉलेजेस के बच्चे थे। एंड ऑल ऑफ देम नॉट अ सिंगल वन वाज लेफ्ट आउट। सब के सब अपने कॉलेजेस के मर्च में घूम रहे थे। जैकेट्स, वार्सिटी जैकेट्स, हुडीज, टी-शर्ट्स और समथिंग, और बहुत अच्छे डिजाइन्स। और मैंने फिर देखा अपने कॉलेज में वैसे डिजाइन नहीं है यार, सबको क्लब स्पेसिफिक बहुत बनाता है, बहुत सिंपल। कॉलेज का लोगो लगा दिया, पीछे कुछ लिख दिया, ऐसे कैसे चलेगा यार? कुछ अच्छे डिजाइन होने चाहिए कि नॉर्मल वेयर में भी बंदे पहन सके। सो वी हैव मेड सच डिजाइन्स कि तुम लोग नॉर्मली इसको पहन के चल सको। एंड क्वालिटी का इसमें कोई इशू नहीं होने वाला है। क्वालिटी इज वेरी प्रीमियम। हम लोग 180-190 GSM का कॉटन क्लॉथ फैब्रिक का टी-शर्ट्स ला रहे हैं, और प्रिंटिंग भी बहुत अच्छी है। इनफैक्ट IIT पटना अन्वेषा में जो यूज़ हुआ था, हम लोग वहीं लोगों से कॉन्टैक्ट किए हैं, एंड दे आर डूइंग आवर वर्क फॉर दिस। सो एक बार डिजाइन को पास से देख लो। नेक्स्ट स्लाइड। ये है ब्लैक में हम लोगों के पास पहला ऑप्शन है। पीपल डू लाइक कीपिंग सीक्रेट्स बट वी आर हैकर्स। सो एंड नेक्स्ट इज अ BYTEVERSE स्पेशल एडिशन, ब्लू, नेवी ब्लू कलर। 2 डिजाइन्स हैं, और आई होप तुम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको खरीदोगे, क्योंकि एक सोवेनियर होना चाहिए यार, एक होना चाहिए। और कुछ लोगों को यहाँ पे फॉर्म अगर तुम लोग खोले होगे, कितना लोग से पोस्टर्स देखे हैं कैंपस में इसके लगे हुए हैं? देखे हो ना? ठीक है, बॉन्स हैं हर जगह, कहीं से भी स्कैन कर सकते हैं, ड्रॉप्स में भी लिंक आ रहे हैं, तो जस्ट परचेज इट। एंड लास्टली अगर किसी को अभी लेने का मन है, अभी ले, ओपन टू सेल, और जल्दी लो। कल ही तक का डेडलाइन है हम लोग के पास फॉर्म में। मेक श्योर स्टॉक लिमिटेड है, so make sure you are getting your first. And रेफरल IDs, yes, रेफरल IDs भी है यार। अपने दोस्तों में पूछो रेफरल ID किसके पास है, रेफरल IDs डालो। रेफरल ID के बेनिफिट सबको मिलेंगे, कुछ ना कुछ तो मिल सकते हैं, किसी को तो बेनिफिट मिलेगा। यस, हाँ, फ्री
कोई भी साइज नहीं है, साइज का सारा ऑप्शन है हम लोग के पास एस से लेके डबल एक्सएल तक। एंड दो टी शर्ट्स में ऐसा कोई कंस्ट्रेंट नहीं है कि दोनों अलग अलग कलर के होने चाहिए, तुम सेम कलर भी ले सकते हो, डिफरेंट कलर भी ले सकते हो, सेम साइजेस डिफरेंट साइजेस, जैसे लेना है वैसे लो, सबके लिए कॉम्बिनेशन बने हुए हैं। और एक और फन फैक्ट, जब AFC का हुडी लॉन्च हुआ था तब मेरे को किसी जूनियर ने मैसेज किया था कि हैक्सलैश का ऐसा कोई मर्चेंडाइज क्यों नहीं आता है, तभी मैंने सोचा था निकालेंगे। सो मेरे को फाइनली वाइटवर्स में अपॉर्चुनिटी मिला कि हम लोग फाइनली एक मर्चेंडाइज हैक्सलैश क्लब का निकाल सके, क्योंकि अभी तक किसी भी कोडिंग बैकग्राउंड वाले क्लब का कोई मर्चेंडाइज कॉलेज में नहीं आया। और यहाँ कितने लोग CSE के हैं यार? CSE वाले तुम लोग तो डूब के मर जाओ, ले यार अपने अपने ब्रांच के क्लब्स के निकल रहे हैं यार, अपने ये अपना चीज है। दिस इज आवर प्राइड, हैकाथॉन्स, कोडिंग। I can see many nervous faces, so I think there was a miscellaneous information that I forgot to give. 28 hours, there won't be anyone breathing on your neck for you to, work unregulated 28 hours. Okay? We also have the provision of recreational activities. Okay? So you will get breaks. No one is. So basically कोई 28 फायदा घंटा। नहीं है? क्या हुआ? क्यों कोई फायदा नहीं है? किसी ने बोला? कोई फायदा नहीं है क्योंकि 28 आवर्स वर्क हो जाएगा, वो तो हर रोज की बात है ना। देखो रेफरल की बात कर रहे थे। ओह थैंक यू वेरी मच फॉर बहुत इंफॉर्मेटिव था, बहुत इंफॉर्मेटिव था। पीयूष के लिए तालियां हो जाए एक बार। So, ऐसा नहीं है कि तुम लोग सोचना 28 घंटे खाली कोडिंग यार, कोई भी पक जाएगा। वर्किंग एनवायरनमेंट में 9 to 5 होता है और उसमें भी ब्रेक्स होते हैं, और फिर सरकारी जॉब्स होती हैं, क्या लंच टाइम। सो हम लोग इस 28 आवर्स के हैकाथॉन में जो ऑफलाइन मोड में होंगे उन लोगों के लिए तो खैर बहुत बेनिफिट्स, और मेक श्योर तुम बेटर आइडियाज लेके आओ। जितने ज्यादा अच्छे आइडियाज होंगे उतने ज्यादा चांसेस होंगे तुम्हारे ऑफलाइन में आने के। एंड ऑफलाइन का फॉर्म 10 से 12 अप्रैल तक निकल जाएगा। सो आइडिया सबमिशन तुम्हें तब करना है, सो यू हैव टाइम, तो तुम आराम से बैठ के एक हफ्ता 10 दिन आइडियाज सोचो, अच्छे आइडियाज लाओ। सेलेक्ट हुए तो ऑफलाइन में होगा, नैनो बिल्डिंग में रात भर हम लोग बैठेंगे, दिन भर बैठेंगे, खाने पीने के सारा इंतजाम कॉलेज दे रहा है। वी आर गेटिंग ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इवनिंग स्नैक्स, एवरीथिंग फॉर यू। मोर ओवर देन उससे भी ज्यादा बढ़िया बात, हमारे पास एनर्जी स्पॉन्सर में रेड बुल है। रेड बुल पूरा तुम लोग को पी के एकदम खुश कर देगा, पिला पिला के खुश करेगा। और इसके अलावा हम लोग के पास रिक्रिएशनल एक्टिविटीज होंगी। एक रिक्रिएशनल रूम बनाया जाएगा जिसके अंदर कैरम, चेस, लूडो, उनो कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स, सब चीज़ की फैसिलिटी होगी। और फन एक्टिविटीज भी हमारे होंगी, क्योंकि पूरा टाइम हम लोग रिकॉर्डिंग तुम लोग को घर तक नहीं देख सकते, हम लोग भी बोर हो जाएंगे। सो वी विल हैव सम फन गेम्स, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पे होंगे वो। ऑफलाइन के लिए कुछ स्पेशल गेम्स मैंने खुद सोच के रखे हैं, और ऑनलाइन के लिए कुछ जो जनरल गेम्स अवेलेबल हैं कुछ प्लेटफॉर्म्स पे लाइक स्क्रिबल एंड सच, we'll be getting playing those. And यार कितना लोग इंटरेस्टेड है आप लेने में? अभी भी सब लोग हाथ नहीं उठा रहे हो। आए किस लिए यार, पार्टिसिपेट करना है सब लोग, कम ऑन। I have been vouching for you guys. यार हम लोग I am defending you guys single-handedly from this person. I do expect some backup यार। लोगे सब merchandise लोगे girls? यार गर्ल्स का तो मैं भरोसा ही नहीं करूंगा, सारे बॉयज ने लिए मैक्सिमम। Okay, so now you have to prove him wrong, ठीक है? 95% बॉयज थे, द बॉयज मूवमेंट। यार लड़कियों के पास पैसे वैसे नहीं है, लौंडे लोग लड़कियों पे Okay, खर्च करते okay, हैं, पैसे let's कैसे? not get misogynistic here. Moving on. Moving on to the next slide. Okay, these are the community guidelines of Hackslash. Of course, when you're participating in an event under Hackslash, we expect you to maintain a certain level of decorum, a certain level of discipline. You are interacting with a great set of programmers and mentors, right? So we expect you to be disciplined enough, to work in that sort of environment. सबके साथ रेस्पेक्टेबल रहो, क्योंकि जिस डिस्कॉर्ड सर्वर में जा रहे हो वहाँ हमारे सुपर सीनियर्स बैठे हुए हैं, वहाँ पे प्रोफेशनल्स बैठे हुए हैं, दूसरे कॉलेजेस से लोग आएंगे, तो उनके सामने अपना इज्जत मत उतार लेना, अपना इज्जत बना के रखना है। लड़कियों के सामने भी अपना इज्जत मत उतरवा लेना, ठीक है? प्लीज बी रिस्पेक्टफुल, ठीक है? रिगार्डिंग जेंडर, where the person is coming from, everything, please be respectful. Moving on.
Okay, thank you. That was enough. You could connect with us, or these are our social media handles: LinkedIn, Instagram, Facebook, YouTube, and Twitter. Please make sure to follow us on all these और एक platforms. स्पेशल नोट यार, बहुत मेहनत करके हम लोग डिजाइनिंग दिन रात करते हैं यार, 3-3 घंटा सो रहे हैं। डेस्को को भी फॉलो कर देना, वी नीड योर सपोर्ट। Moving on. सिमरन, Okay, after this session, अच्छा, was this useful to you in any way? कुछ भी queries हैं, पूछ सकते हो. Please don't be intimidated or anything. बताने के लिए आए हैं हम लोग आज। इतना अच्छा काम कर दिया explain करने में. सारी queries solve हो गई. Any queries, anyone? The stage is open. Please don't be scared. ये मैं सोचूं कि जज होंगे या कुछ भी. यार जो साइंस पढ़ते हैं उनको ऐसा होना चाहिए, हो रहा है तो क्यों हो रहा है। उन्हें हमेशा क्यों का जवाब चाहिए होता है, ऐसे लोग ही तो हैं हम लोग। इंजीनियरिंग क्या है? Anyone, any queries? EPI के वर्कशॉप ऑफलाइन मोड में होंगे और उनके अंदर क्या होगा, तो फर्स्ट उसके डिटेल्स ऐसे आ तो जाएंगे, लेकिन फर्स्ट सेशन की इंट्रोडक्शन है। सर आप बताएं। ओके, API सेशन के बारे में बता देंगे अभी सर आगे। Anyone else? Any other queries? और कुछ? No programming language constraint. You are free to build anything which is workable and which implements any of the theme or your open innovation. कुछ भी ऐसा बनाओ जिससे कुछ सोसाइटी को बेनिफिट हो जाए, या कुछ भी तुम ऐसा डेवलप करो जिससे कुछ यूनिक हो, नॉट एनी प्लेगराइज्ड आइडिया। कुछ अपना यूनिक ला के दिखाओ, या फिर कुछ ऐसा चीज़ बनाओ जो कि सोसाइटी में मुझे लगता है हेल्प करेगी, कंट्रीब्यूट कर सकती है। एनी आइडिया यू कैन। We do have special track prizes though. हाँ, Okay. स्पेशल ट्रैक प्राइजेस में हम लोग के पास काफ़ी अच्छे हैं। उसका Replit है, okay, Polygon है. If you use their stats, ठीक है, और तुम्हारा idea actually उनको पसंद आता है, okay, so then they will consider you for future internships roles, or even you know उनसे कितने I guess $100 plus तक के आपको उनसे scholarships भी मिल सकते हैं, which is a great opportunity by the way, regardless कि तुम्हें उस platform के बारे में कितना पता है, ठीक है. As I said, resources are unlimited and they are at your disposal. ठीक है, so it's up to you how you use those और resources. इसका डाउट आ रहा था। सर डैशबोर्ड पे थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा, मतलब डैशबोर्ड पे हैकर्स का चैनल तो फॉलो कर लेकिन उसके बाद डिस्कॉर्ड पे क्या? डैशबोर्ड पे अकाउंट बना के चैनल तो फॉलो कर लिया, लेकिन उसके बाद आगे क्या? सर्वर अगर तुम लोग ज्वाइन कर लिया, अभी सर्वर पे बैठ जाओ तो तुम पूरी टीम्स बन जाएंगी प्रॉपरली। हम लोग एक तुम लोगों का सबका टीम का एक वॉइस चैनल जनरेट करेंगे जिसके अंदर तुम्हारे टीम मेंबर्स होंगे, और वहाँ पे हम लोग आगे हम लोग आएंगे एक बार, कभी मेंटोर्स आएंगे, कभी जजेस आएंगे, हम लोग आके तुम्हें गाइडेंस देंगे, तुमसे रिव्यूज लेंगे, जो भी है वहाँ पे तुम लोग। इसके अलावा वहाँ पे टिकट सिस्टम होगा, तुम टिकट जनरेट कर सकते हो। टिकट जनरेट करने से एक मेंटोर तुम्हारे पास आएगा विद इन एन आवर, आई थिंक एज फास्ट एज पॉसिबल तुम्हारे पास एक मेंटोर आएगा, वो टिकट तुम यूज कर सकते हो, और वो मेंटोर आकर तुम्हारा कोई भी इशूज है या क्वेरी है रिगार्डिंग योर आइडिया, और तुम्हें कुछ गाइडेंस चाहिए तो सब सॉल्व करेंगे। When you're filling up the registration form, ठीक है, तो वहाँ पर एक आया होगा ना सेक्शन प्रोवाइड योर डिस्कॉर्ड लिंक, है ना, आया होगा registration form देखा है? डैशबोर्ड पे अभी you will get an updated registration form, ठीक है, it will be circulated in all your groups, ठीक है. उसमें you will provide your Discord ID, ठीक है. Your team members will provide their Discord IDs, and then we will form all those team channels, ठीक है. Other than that, I know that Discord is a very new platform for many people, ठीक है. Again, YouTube है, use it for your utility. उसको use करो, उसको देखो Discord कैसे function करता है. Of course, if you get stuck anywhere, there are people who are more than happy to help you. Any other queries? Yes. BSc भी कर सकता है, BCA भी कर सकते हैं, BTech भी कर सकते हैं अप टू 3rd ईयर। और इसके अलावा ऐसा नहीं कि सारे फर्स्ट ईयर एक साथ मिलकर टीम बना रहे हैं, तुम किसी भी ईयर के हो सकते हो, दूसरे कॉलेजेस से भी हो सकते हो, फुल मिक्स मैच करके टीम बनाना We will have a series of promotions, okay, in order to solve all those doubts, okay. Any other queries? हाँ, एक और इंफॉर्मेशन छोटा सा, चैट जीपीटी कितने लोग सुने हैं?
तो वैसा कुछ भी AI वाला सर्विस यूज नहीं कर सकते इसके लिए। क्योंकि यूज करोगे आइडेंटिफाई हो जाएगा, डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा, तो कम्युनिटी रिव्यू पीरियड उसी के लिए है, सो पकड़ लीजिए। एनीवन एल्स? सो आई थिंक सर Okay, now I hand over the mic to Shivam sir. तालियां बजाओ यार। Well, first of all, I would like to thank Anushka and Sameer for this wonderful information session. They have pretty much covered everything. Just the remaining few points which I would like to add. पहली तो बात ये कि prices will be same for offline as well as online participations. There's nothing कि अगर आप online participate कर रहे हो Discord के through, if you couldn't make it to the offline seating plan that we have, if you couldn't make it to that, so आपको prices के मामले में आपको कुछ ना तसल्ली करके रहना पड़ेगा. It's nothing like that. And secondly, I have to emphasize here at this point the importance of LinkedIn. So when you are about to register on this, when you go for registering on this Portfolio platform, they'll ask you your LinkedIn profile. So how many of you have your LinkedIn profiles here ready? Okay, that's good. And how many of you don't have it ready? Please, there's nothing to be worried about. So so this basically is important because LinkedIn पर एक ऐसा platform मिलता है आपको wherein you can show off yourself, your achievements, your learnings over whole of your career, whole of your journey or education of 4 years or BTech or whatever. So the thing is जो दिखता है वो दिखता है, right? If you show yourself to be someone who is into the community, who is into community activities, eagerly participating in hackathons, or trying out some development and open source contributions. So if you show to the world that you are into these activities, so will the world know that this person is potent enough to be a good asset to my company or to my organization. So that is where LinkedIn comes into play. And this hackathon probably for most of you is going to be the first step towards branding yourself. Last hackathon में मुझे याद है there was this session, there was a speaker called Miri Rodrigo. So she's from in season HR at Microsoft LA. So she came in and her title for the session was brand storytelling. So she emphasized on the need of these hackathons and such communal activities for aspiring developers like us, like ourselves, to build our career. है ना? We have to emphasize on the importance of these activities towards our end goal. End goal क्या है हमारा? To get settled somewhere good, right? To be placed somewhere good. Obviously, all of you might be having that goal in common, right? है ना? So for that, the journey begins right here, right at this moment. So this 28-hour long session is not just about sitting there and enjoying and having fun. The main motive is to learn. I'll tell you a story. Hello. So the thing which happened with me was कि when I was in my first year, तो आप लोगों को तो फिर भी काफ़ी समय हो गया अब जो ये हैकाथन ऑर्गेनाइज हो रहा है, but when we came in our first year, so it started around December 15th or 16th of 2020, and right 1 month ahead of it was the hackathon. Hackslash came up with the hackathon which was scheduled on 14th or 15th of January. So most of us, we didn't know nothing about what development is. बेसिक HTML CSS भी पता नहीं कितनों को आता था, मोस्टली लोगों को नहीं आता था. बट देयर वाज दिस टीम, आई मीन माय टीम वाज लाइक 100 टीम्स की पार्टिसिपेशन थी इवन एट दैट टाइम, एंड माय टीम्स वी स्टूड एट 30th पोजीशन. एंड व्हाट वी implemented just a basic website with HTML CSS and JavaScript which we learned overnight. 4 घंटे में उसको देखा, हमने वीडियो देखा कि हाँ भाई जावास्क्रिप्ट में इफ़ यू यूज़ दिस फंक्शन इट डज दिस फंक्शन डज दिस, HTML में फॉर्म ऐसे क्रिएट करते हैं, है ना, पेजेस के बीच में ऐसे हम शिफ्ट करते हैं. सो इफ वी स्टडी दोज थिंग्स इन 2 or 3 hours एंड देन फॉर द नेक्स्ट 5 or 6 hours वी टुक टू बिल्ड व्हाट वी सबमिटेड. ठीक है, वी डिड डू क्वाइट गुड, but yeah, we were 30 and there was this team of
friend of mine is in CSE section 2. Their team was 11th. Their team held the 11th position, which is a great substantial thing to think about. Provided that उस समय भी participations were even in that online mode. Participations were from colleges all over India, and in that season, this winning team was from I don't know. नहीं, NIT Surathkal was last year. NIT Surathkal वाली टीम पिछले साल जीती थी. So they built this kind of augmented reality teaching system, wherein जो MBBS के स्टूडेंट्स हैं तो वो सर्जरी परफॉर्म करने के टाइम में आजकल डमीज मिलती है. चलो ऑब्वियसली तुम्हें ह्यूमन बॉडी देंगे नहीं लर्न करने को, यू दे विल गिव यू डमीज. बट डमीज पर कितने काम करेंगे, कितने ही लोग एक बार में डमीज पर काम कर लेंगे? हार्डली 2% एट अ टाइम, 3 डॉक्टर्स एट अ टाइम. बट देयर सिस्टम वाज दिस ऑगमेंटेड रियलिटी थिंग wherein they'll give you glasses or they'll project it from a device or a phone and then you can operate it, right? ये जो device के कैमरे होते हैं तुम्हारे, they'll monitor the coordinate of your hands on the world coordinate, whatever is being captured in the camera. और वहाँ पर डिस्प्ले होते हैं तुम्हारे डिवाइस की स्क्रीन पर all the organs, human body. आप जैसे जितने डेप्थ पर जाओगे वो डेप्थ मेजर कर रहा है कि कितने डेप्थ पर आप कट लगा रहे हो. So this was the winning team which won the last year's hackathon NIT Surathkal. If not that, at least you could pitch up your idea. At least you could try working a bit in that direction. At least in those 28 hours, तुम सीख तो सकते हो ना augmented reality. 2-3 YouTube videos देखकर. So that is what matters in a hackathon. It's not about winning. Winning should not be an end goal. Again, I'm emphasizing. But what matters is to come up with ideas. Come up with ideas that differentiate you from others, right? कि तुम भाई NIT पटना में बैठे हो तो ऑब्वियसली तुम्हारे पास दिमाग है, तुम यहाँ पर आए हो, एंड नॉट जस्ट दिस, यू हैव टू आउटशाइन अदर्स. यू हैव टू कम्पीट विद ऑल द पीपल हु आर देयर लाइक ओके ठीक है चलो चल लेते हैं. बिकॉज पीपल आर देयर विद दैट मेंटालिटी कि हमें तो जीत कर आना है, हमारे पास ये प्रोजेक्ट है, हम जाएंगे NIT पटना में उनके कैश प्राइस को लेकर आएंगे. यू हैव टू गिव देम अ गुड कॉम्पिटिशन. दैट शुड बी द स्पिरिट. नाउ वन मोर थिंग, Git and GitHub. Git and GitHub is again most of you would be knowing this, code contribution के platform है, right? Like all of your team will work together on a project. तो जितने भी codes हैं वो सारे एक जगह तुम लोग maintain करके रखते हो Git and GitHub में. So you can push it, you can see who has pushed which code, who has made the changes and all. And a detailed workshop for Git and GitHub will be held in our workshop sessions. Their dates are yet to be announced. So that because Git and GitHub are very necessary for making your submissions. जो भी आप जरा सा भी एक पन्ने का भी अगर आप एक HTML फाइल भी बनाकर कोड कर रहे हो, इवन दैट हैज टू बी सबमिटेड इन योर GitHub प्रोफाइल. यू हैव टू अपलोड दैट कोड इन योर GitHub प्रोफाइल एंड यू हैव टू सबमिट द लिंक फॉर दैट, राइट? एंड द थर्ड थिंग, इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू लर्न अबाउट डॉक्यूमेंटेशन. प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है? डॉक्यूमेंटेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बीइंग अ सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर. यू हैव टू हैव अ गुड नॉलेज. ठीक है, तुमने तुझे प्रोजेक्ट बना दिया, बट अगर वो प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्स है, अगर सामने वाले को समझ नहीं आ रहा कि व्हाट्स द पर्पस दैट द प्रोजेक्ट इज सर्विंग, तो योर होल पर्पस ऑफ बीइंग अ डेवलपर इज डिफीटेड. डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर इज व्हाट हु बिल्ड्स फॉर द सोसाइटी, बिल्ड्स एप्स और डेवलप सॉल्यूशंस फॉर द सोसाइटी. और अगर सोसाइटी के लोकल लेमन लोगों को समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी को, उसको रन कैसे करना है, बेसिक दे डोंट इवन नो अबाउट हाउ टू रन दैट एप्लीकेशन, इट डिफीट्स द होल पर्पस, राइट? So you have to learn about documentation. It will also be taught, right? Good paradigms for documentation. A good documentation will be taught to you in this Git and GitHub session. ठीक है? तो हर किसी को अपने प्रोजेक्ट सबमिशन में डॉक्यूमेंटेशन मस्ट है. There should be a documentation on the GitHub projects repository कि how to run this project, what the project serves, and आपने अगर इसको डिप्लॉय किया है, आपका डिप्लॉयमेंट URL क्या है, आपने इसके साइट्स जो भी आइडिया प्रेजेंटेशन PPT है वो आपने कहाँ डिप्लॉय, आपने कहाँ होस्ट की है, ड्राइव लिंक, राइट? 2 more points. One is being the community review window. I observed it that none of you have asked this doubt at that time कि community review window है क्या? Can anyone of you tell me what was the community review window? Anyone? I know it's getting a bit of humid in here. Again, NIT Patna things. But for the main workshop, API days, workshop sessions and all, we'll try कि उसके पहले all of the ACs are working fine and good. Because not just you, there will be also Dean Student Welfare Director, like Professor in charge of IT services of our club, Professor in charge of the incubation center, all of them will be sitting here with us. So we'll surely want कि उनके आने से आपको भी benefit हो जाए.
एनीवेज सो व्हाट इज कम्युनिटी रिव्यू विंडो क्विक ठीक है तो हमारा जो ये हैकाथॉन है ना इट इज एवरी फोकस ऑन ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन ओपन सोर्स जो भी कोड आप हैकाथॉन में अपने प्रोजेक्ट बना रहे हो द कोड शुड बी ओपनली विजिबल टू एवरीवन ऑन दिस इन दिस प्लैनेट ठीक है एवरीवन कैन व्यू योर सोर्स कोड चाहे आप कितना भी कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन बनाओ या इजी सॉल्यूशन बनाओ दिस इज कॉल्ड ओपन सोर्स इज समथिंग विच इज नॉन प्रॉफिटेबल someone is not reaping the profit out of that code. It is a code which is maintained by the community. Community again and again is very important in development, software development, because community is what teaches you. जितना आप किताबें पढ़कर नहीं सीखोगे, जितना आप यूट्यूब ट्यूटोरियल से नहीं सीखोगे, उतना आप एक किसी क्रिटिसाइजर से सीखोगे जो बगल में बैठकर बंदा आपको क्रिटिसाइज कर रहा है कि भाई ये तुमने ये गलत सा कोड लिख दिया, ये इस लूप को यूजलेसली तुम यहाँ पे क्यों लूप कर रहे हो, तो यू कैन डू जस्ट यूजिंग वन लूप नॉट टू लूप्स. So this is what community teaches you. Like this is a newer feature. You can try using this feature. So community review means कि आपने जो project submit किया है, तो it will be open to everyone participating in the hackathon to view your code. And if there is a plagiarism which they feel कि ये code कहीं से copied है, तो they'll report to us that this code is plagiarized. So before copying your code, ensure it कि ऐसी हरकतें ना हो. Because outright copying will be easily detectable and people would surely see this because everyone is competing against you. हर किसी को तुमको टांग खींच कर गिराने में everyone is interested, right? So please don't do this. So that is a community review window. And the final thing is API days. This hackathon has the title sponsor Postman. Postman is a company which works for promoting API literacy. APIs क्या होती हैं? APIs, anyone knows about APIs? APIs? Quick. Alright, basic level, API is a middleware. Let's suppose आप अगर किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो आप किचन घुसकर शेफ को नहीं बोलते कि भाई ये इंग्रेडिएंट लाओ, ये बनाओ मेरे लिए. आप किसी वेटर को बोलते हो कि हाँ भाई जाओ ये पकवा कर मेरे लिए लाओ. तो दैट्स दिस मिडिल पार्ट. आपने बस वेटर को ये बोलना है कि आई जस्ट वांट टू ईट दिस थिंग टुनाइट. एंड अब वो इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है दैट द शेफ नोज. You don't have an idea about how the implementation is being done. Obviously, any restaurant would not want you to steal the secret masala for the chicken tikka. No one. That's the thing. This is how APIs work. APIs provide a security level. कि आप सर्वर में क्या लॉजिक चल रहा है, it's not visible to you. It just provides you the abstraction. कि काम बस हो जाना चाहिए आपका. आप उसको डेटा दो, आपको आउटपुट रिटर्न करेगा. सर्वर पर क्या कोड चल रहा है, that's not visible to you. So everything pertaining to these things, like security features, deployment using DevOps and all, everything good. Basically, it's everything good, everything knowledgeable, everything for your benefit, for you to use in the hackathon. Actually, will be very beneficial. So please grab those tickets fast. Tickets कब रिलीज होंगी? 5 तारीख को. 5 को टिकट्स रिलीज होंगी और टिकट के रजिस्ट्रेशन URL के साथ पोस्टर्स 5 को लग जाएंगी. So keep an eye out for it. We have limited seat because Postman says it कि उन्हीं को बुलाओ जो इंटरेस्टेड है. एंड फॉर दैट पर्पज दे हैव फिक्स्ड द सीट नंबर टू 200 पार्टिसिपेंट्स. नॉट जस्ट फ्रॉम NIT पटना माइंडेड कि ये मत सोचना कि 200 हैं तो बस NIT पटना से फिल नहीं होंगे. इट्स फ्रॉम एवरीवेयर, ओपन टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स इन पटना. देयर इज वन मोर पोस्टमैन स्टूडेंट लीडर, लाइक आई एम अ पोस्टमैन स्टूडेंट लीडर, एंड देयर इज दिस अदर गाय प्रद्युम्न सराफ. ही इज अ वेरी like well versed developer and open source contributor. He'll be also there with me on that day for taking one of those sessions. So his work is बाकी पटना में spread कर रहा है. All of the Patna knows about this. I'm probably thinking that NIT Patna is the last one to know about the API Days workshop. So please keep an eye out for it. जैसे लिंक रिलीज होती है, जैसे लिंक पब्लिक होती है, टिकट बुक कर लो. And yeah, that's pretty much it. Looking forward to see every one of you in the hackathon and evaluating your projects. And yeah, mentorship is always open. जब भी आपको mentorship की दिक्कत हो, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, बस अपने वॉइस चैनल पर आओ और @mentorship टैग करो. Me or any of my co-organizers who are the mentors will be there to help you if you get stuck on the project, right? Yeah, thank you. Thank you very much. अभी भी कुछ पूछना है?